we have seen the evolution in the biological sense, the organism's evolution from simpler to complex, human evolution, हर जगह पे evolution करके देखा है हमने. So what do you understand by evolution? Gradual change. Okay, gradual and progressive change. Let's modify it. So what we have studied in the biological anthropology or primatology or paleoanthropology, that evolution, this term we have understood. Evolution is gradual and progressive change. यहाँ पर प्रोग्रेसिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेशमा, डोंट फॉरगेट प्रोग्रेसिव चेंज. हमेशा ये कहता है कि एवोल्यूशन जो है वो हमेशा एक प्रोग्रेसिव मैनर पे आगे बढ़ता है. सी ऑन दिस सेम लाइंस, सी दिस इज इन द सेंस वी हैव अंडरस्टूड एवोल्यूशन फ्रॉम द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, हाउ द ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व फ्रॉम वेरी सिंपलर लाइक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से इतना मल्टी कॉम्प्लेक्स organisms, that to multitude of forms got diversified, it got formed into different organisms. ये वाला concept हमने समझा था. Now the same concept around like 17th to 18th century, many people started applying the same concept in the socio-cultural sphere. See, this concept by 17th to 18th century, Lamarck, then came Darwinism. So by mid 19th century, this biological evolution concept is very well developed, and experiments were going on. Further experiments we have seen 20th century, earlier 20th century, it has seen the postmodernism in the biological evolution. Various people through genetics contributed. So on the parallel lines of it, during the 19th and 20th century, particularly 19th century, efforts have been made to define, to understand socio-cultural progress through the system of evolution. So they have applied socio-cultural evolution model. मतलब जिस तरीके से सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होकर आया है, उसी तरीके से सिंपल सोसाइटी, सिंपल कल्चर से कॉम्प्लेक्स कल्चर से इवॉल्व होकर आया है. दैट इज व्हाट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड हाईलाइटेड बाय 19th सेंचुरी एवोल्यूशनिस्ट. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनिस्ट है. सी द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड क्लासिकल is because of their thought process, is because of the methods they have employed. इसीलिए इनको क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं. एंड दे ऑल बिलीव्ड दैट socio-cultural evolution जो है that has happened from simplest form to the complex societies. And यहाँ पर mainly three proponents are very very important. One is E.B. Taylor, Edward Brunett Taylor, L.H. Morgan, that is Lewis Henry Morgan, and another person is James Fraser, though he belonged to the 20th century, but he was a classical evolutionist. Okay. Now, what we are going to understand here is, as a generalistic point, what all three of them said with respect to the evolutionism. See, when we are talking about evolution here, this is the social evolution that these guys are talking about, not the biological evolution. Of course, the premise is same on the premises of Lamarck and Darwin, who have given the biological evolution concept. These guys are trying to apply the same to the social evolution, socio-cultural evolution. And you may ask, why classical? Because of their approaches, because of their mindset. That is the reason why these are called classical evolutionists or 19th century evolutionists. Of course, an exception, Fraser. ठीक है? So यहाँ पर let's look at these guys and what they have given, the basic premises of it. On the basis of this theory, how can we conclude some things? ठीक है? So heading रख लीजिए आप, classical evolutionism
एंड यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख के देन वी विल एंटर इनटू द मैटर. ठीक है, प्लीज इंट्रोडक्शन लिख लीजिए. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, अर्ली ईयर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मतलब एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट कहाँ पर हुआ था, 1835 के आसपास. ठीक है, वहां से स्टार्ट मानते हैं. उससे पहले का वी हैव सीन ऑलरेडी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, फॉर्मुलेटरी पीरियड, क्रिटिकल पीरियड, इस तरीके से. ठीक है, पेनीमैन बुक जो है 100 ईयर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी उसमें डिवीजन कर रखा है. 1835 फॉर्मली द बिगिनिंग मानते हैं. सो इन दोस अर्लियर टाइम्स, ठीक है, 1859 चार्ल्स डार्विन का थ्योरी आ गया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. In the early years of anthropology, the focus revolved around evolution centric origin and development of human culture and society. Human culture and society. सो इसका बेसिस जो है सेम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन वहां पर है इसका बेसिस. ठीक है, इसमें लिख लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए. द थीरीज मेनली फोकस्ड ऑन, the theories mainly focused on evolution of family, evolution of family, marriage, kinship, religion, etc etc. इन सबको हम पढ़ के ही आया है, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम. ठीक है, etc. which are seen as common to all societies, से यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट किया है. वी कैन टॉक अबाउट हर्बर्ट स्पेंसर्स कंट्रीब्यूशंस आल्सो, बट let us stick to our syllabus, what is given in the syllabus, and through which we will try to understand the evolution of these primary institutions in different societies and how they got diversified. That is our primary goal, which we have studied while beginning our journey from 2.1 section. So all those points can be recalled here. ठीक है, so please. यस, इसमें आफ्टर राइटिंग दैट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लीजिए, द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म was proposed in 19th century, in 19th century on the presumption of existence of single model of civilization, presumption of existence of
single model of civilization. Full stop. It is also known as unilineal evolution. यूनिलिनियल एवोल्यूशन. यूनि मतलब सिंगल, मतलब एक ही डायरेक्शन में, सिंपल वन डायरेक्शन में, फ्रॉम प्रिमिटिव और सिंपल सोसाइटीज टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज इन वन डायरेक्शन, ऐसे इवॉल्व हुआ है, ऐसे प्रोग्रेसिवली चेंज हुआ है, ये बिलीव करता है यूनिलिनियल एवोल्यूशन. तो स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, दिस फॉर्म ऑफ सोशल एवोल्यूशन वाज, this form of social evolution was built upon the success of Darwin's theory of evolution. Darwin's theory of evolution. जिस तरीके से डार्विन ने कहा है कि देयर इज लाइक एवोल्यूशन फ्रॉम स्मॉलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टीट्यूड ऑफ बिगर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इसी तरीके से इन्होंने क्या कहा है कि सोशल चेंज भी, सोशल एवोल्यूशन भी इसी तरीके से सिंपल से हायर फॉर्म पे या कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में डेवलप होते गया है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज आल्सो सेड एज यूनिलिनियल एवोल्यूशन. ठीक है, इनका कुछ कंट्रीब्यूशंस जो है. नेक्स्ट प्लीज राइट. आप ये लिख सकते हो, मतलब कुछ अजम्पशन भी देखना है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखना है, why they are called classical evolutionists and the contributions of all these three persons one by one. ठीक है, हाँ, the contributions of all these persons one by one we will look at it, and then later we will do the critical analysis of the same. At the bottom we will conclude. That will be the structure. क्या structure क्या रखेंगे हम? सबसे फर्स्ट we will look at the basic premises or basic tenets. ठीक है, so it is actually creating problem, this board. See, basic premises or assumptions, under what assumptions this theory have been made. Then we will look at contributions. Contributions in general भी देख सकते हैं, या contributions by person wise, जैसे टेलर है या मोर्गन है या फ्रेजर है, इस तरीके से देख सकते हैं. Then we will do the criticism of it, critical analysis of it, then finally the conclusion of the same. ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर रखा करेंगे हम. ठीक है, सो इसमें सबसे फर्स्ट जो है, let us look at what are the basic premises and on what modes these theories got developed. ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट वाइज लिख सकते हो आप, वन बाय वन. See, these people are called armchair or classical evolutionist or armchair evolutionist or armchair anthropologist. The reason is they were sitting in their offices and collecting the data through the secondary sources. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रीजन. इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं बाद में. तो प्लीज राइट, वन बाय वन पॉइंट्स लिख लीजिए. बेसिक प्रीमाइजेस, ठीक, ऑफ क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट. उसमें सबसे फर्स्ट वी कैन राइट वन बाय वन. The data is collected. The data is collected by traders, missionaries. उस टाइम पे colonialism on the rise. So there were so many Christian missionaries, census
Britishers used to conduct the census work as well. ठीक है, census etc. Therefore, these methods are called secondary methods of data collection. Secondary methods of data collection. To stop, and the anthropologists are called armchair anthropologists. Armchair anthropologists. They were sitting in their office. ठीक है, that's the meaning of armchair. So ये first point है. Next, second presumption or basic tenet is that all of them believed in the psychic unity of mankind. मतलब they believed that humans all around the world एक जैसे सोचते हैं. They are मतलब uninventive. They simply go from one stage to another stage in the similar manner. They think in the alike manner. सेम, एक जैसे सोचते हैं. ये वाला बिलीफ है इनका, ये वाला प्रिजम्पशन है. प्लीज राइट. नेक्स्ट पॉइंट, they believe in psychic unity of human mind. They believe in psychic unity of human mind. That is, human minds share similar characteristics all over the world. Similar characteristics all over the world. ये बिलीफ है. मतलब साइकिक यूनिटी ऑफ माइंड मतलब एवरीवन एक जैसे सोचते हैं, एक जैसे एक्ट करते हैं. ये वाला बिलीफ था. ठीक है. सो इसी बेसिस पे इन्होंने कहा है कि मतलब यहां से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, व्हेन ऑल ऑफ देम आर सेम, दे आर थिंकिंग सेम, दे आर सिमिलर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका मतलब भाई उसमें जो प्रोग्रेसिव चेंज आता है, एवोल्यूशन जो होता है, दैट आल्सो गोज थ्रू द सेम स्टेजेस, सिमिलर स्टेजेस. So that is the reason why they have given the theory of unilinear evolution. एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन पे चेंज होने वाला. ठीक है. सो ये वाला इन्फर कर सकते हैं. प्लीज राइट, इसी में लिख लीजिए एरो करके. दिस मीन्स दैट ऑल द पीपल and their societies, all people and their societies go through same process of development, same process of development. This is the reason why it is also called as unilinear. Already we have written, I think. ठीक है, यहां पर लिखा है हमने unilinear evolution. से सिंपल है. What it indicates is that each and every society goes in the same direction. ठीक है, जैसे सिंपल सोसाइटी से लेकर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के जैसे आगे बढ़ता है. सो दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर थ्योरी बिलीव्स इन. ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में एरो, इस एरो में डेवलप होता है. दिस इज व्हाट यूनिलिनियर. ऑल ऑफ द सोसाइटीज passes through the same stages. यहाँ पर different stages you can find. ठीक है. So that's the reason why you have
because of different stages of their development, you have different cultures. That is the reason why itna sara diversities are there. Ultimately, these diversities are also going to merge with this present contemporary societies where civilized people are there. ये इनका belief है, ठीक है. So this is another point. Next एक और point लिख लीजिए. Third. They believed in Western superiority. They believed in Western superiority. मतलब देखो, जो यूरोप का कल्चर है, यूरोप कल्चर इज आइडियल, Christianity is superior religion, superior English language is superior. इस तरीके से इनका बिलीव था, ठीक है. तो वेस्टर्न सुपीरियरिटी में ये बिलीव करते थे, ठीक है. इसी तरीके से लिख सकते हो. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट there is a ethnocentric view of evolution, ठीक है. इसलिए इनको ethnocentric evolutionists भी कहते हैं, ठीक है. They believe that the technology possessed by Europe is the superior one and Christianity is the supreme of all the religions and true religion, बाकी जो है वो फॉल्स रिलीजियंस है. ये वाला बिलीव था उनका, ठीक है. दिस इज अनदर बेसिक टेनेंट. देन एक और है, they assumed that in the initial times there was promiscuity in the society. मतलब sexual promiscuity was there in the simpler societies that we have seen. Here there is sexual promiscuity, and as they are progressing towards this, monogamous marriages evolved. This is another presumption that they made. Please write. They believed that simple societies have promiscuity, comma, there is no social, no, ऐसे लिख लो, there is no incest taboo, which we have studied about. Incest taboo and other social rules regarding sexual relations and marriage. Yes, ये इनका बिलीफ था, सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी. बाद में इनका क्रिटिसिज्म में देखेंगे कि देर आर सो मेनी सोसाइटीज, सिंपल सोसाइटीज, वेयर दे हैव taboos related to this, social taboos were there. We have seen while studying incest taboo, it is a universal, it can be found in all societies. ये भी एक था promiscuity, ठीक है. Another thing they have done is, since ethnocentric view है, on the basis of it they have done the comparative analysis. Comparative studies have been done, comparative methods have been employed.
प्लीज राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दे हैव एक्सटेंसिवली यूज्ड, they have extensively used comparative methods, comparative methods.